हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। आज आम बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी। दिस इज द लास्ट फुल फ्लेजेड बजट बिफोर द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। और सब लोग का कहना है ये पॉपुलिस्ट बजट है, यानी कि लोक लुभावन करने के लिए बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारामन जी कह रहे हैं ग्रोथ के साथ इंक्लूसिवनेस, यानी कि समावेशी है। और ये भी कह रहे हैं कि ये बजट मध्य वर्ग के लोग, मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आयकर छूट मिला लोगों को। टू डिमिस्टिफाई द बजट, टू एनालाइज द बजट, लेट मी वेलकम द गेस्ट हु आर विथ मी हियर इन द स्टूडियो। मेरा बाएं हाथ में दीपा सिन्हा जी बैठे हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। हमारा साथ है विकास रावल जी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर सुरजीत मजुमदार JNU से भी है। और जूम में हमारे साथ आ रहे हैं चिरश्री दासगुप्ता, वो भी अर्थशास्त्री है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो दीपा जी, मैं शुरू करूँ आपसे। फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ Union Finance Minister Nirmala Sitharaman's a relatively short speech by her own standards, presenting the Union budget for 2023-2024, says that she envisions a prosperous and inclusive India, in which the fruits of development reach all regions and citizens. और उन्होंने नाम करके बोला यूथ, women, farmers, OBCs, अन्य पिछड़े जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स. So do you think this budget is really going to help the weakest sections of India's population? Well, unfortunately, I don't think so. Going through the numbers, of course, there was a lot said in the budget, but the devil lies in the details, like we know. यही सारे ग्रुप्स अगर आप ले लें जो इनको डायरेक्टेड जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं जो इमीडिएटली इनको फ़ायदा करता है, उसमें सभी में हमने एक्चुअली देखा है कि इस बार बजट में कटौती हुई है। खास करके अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, आप फार्मर के लिए सबसे बड़ा इस सरकार का क्या रहा है, PM किसान इनका इंटरवेंशन रहा है, वो जो स्पीच में भी मेंशन हुआ, लेकिन उसका बजट एक्चुअली पिछले साल के तुलने में कम है इस साल जो एलोकेशन है। मैं आपको रोक रहा हूँ। ये जो आपने कहा, ये जो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च कर रही है, और एक साल जनवरी 2023 से एकदम दिसंबर तक आप ये कार्यक्रम लागू है। सो दिस इज मेंट फॉर जो अंत्योदय स्कीम में आ रहे हाउस होल्ड जो हैं, isn't this one of the most popular schemes, one of the schemes that has increased the popularity of Prime Minister Narendra Modi, जो लाभार्थी है हम कहते हैं। So I was talking about the PM Kisan, but All I right. will tell you about the tell... PMGK. Yes, please. This is just a नामकरण changing that has happened. जो 2 लाख करोड़ इस साल allocate हुआ है to give 5 kgs of grain to those who have a ration card, that is under the National Food Security Act, जो 2013 से चल रहा है। और उसमें पहले लोग 3 रुपए चावल और 2 रुपए गेहूं को देते थे, अब उनको वो उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। PMGKY, the last 2 years, which made our Prime Minister so popular, was where they were giving an additional 5 kilos free as COVID relief. पर वो अब नहीं दे रहे हैं, जनवरी इस महीने से वो नहीं दे रहे हैं। तो आपने क्या किया, गरीबों से 5 किलो अनाज आप ले लिए, और 5 किलो जो दे रहे हैं उसमें 15 रुपए उनका बचा रहे हैं आप। तो एक्चुअली यू आर सेविंग 15 रुपीज, बट दे आर हैविंग टू स्पेंड मोर देन 100 रुपीज टू बाई दैट मच फ्रॉम द मार्केट। मतलब फायदा नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, घाटा हो रहा है ना। अच्छा, और आपने कह रहे जो PM किसान स्कीम जो 6000 रुपया बैंक का खाता में आ रहे थे, इनके बारे में कुछ कह रहे थे आप? या आई वाज सेइंग उसका भी इस साल का बजट एलोकेशन आप देखें, इट हैज रिड्यूस्ड। इट वाज आई थिंक अराउंड 70,000 करोड़, वो 60,000 हो गया है। अच्छा। तो डायरेक्टली जो कैश ट्रांसफर जाता है फार्मर्स के लिए, वो भी कम एलोकेशन किया गया है। अच्छा। विकास रावल जी, अभी दीपा सिन्हा जो कहा आपने सुना, मगर प्रधानमंत्री का एक छवि है कि हम गरीब और गरीब के कल्याण के लिए, लाभार्थी के लिए हमने मुफ्त में
गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, चने की दाल दे रहे हैं, और ये प्रधानमंत्री का लोकप्रियता बढ़ गया। हमने देखा उत्तर प्रदेश का चुनाव का नतीजा। तो नंबर्स कौन देखते हैं, बजट के अंदर आंकड़ा कौन देखते हैं, मगर जो बड़ा छवि है चुनाव का पहले, द प्राइम मिनिस्टर इज गॉड, भगवान का अवतार है। बहुत गरीब लोग हमारे देश में समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भगवान का अवतार है। नहीं, लेकिन इसमें ये देखने की बात है कि जो उन्होंने कोविड के दौरान 10 किलो दिया, उसको जैसा दीपा बता रही थी अब कम करके 5 किलो कर दिया। उसके साथ साथ और जितनी भी उनकी बड़ी बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं थी, उन्होंने जब वो आए थे प्रधानमंत्री बनकर, वो बड़ा एक बजट में हल्ला मचाया कि वो पीएम उज्ज्वला योजना में सबको गैस सिलेंडर दे रहे हैं। अभी जो है पेट्रोलियम सब्सिडी को बिल्कुल लगभग ख़त्म कर दिया गया है। कोई मतलब पिछले 3-4 साल में वो पेट्रोलियम सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, और जितना भी वो गैस था वो बिना सब्सिडी के। मैं आंकड़ा दे दूं? जी बिल्कुल, 75% कम हो गया। रिवाइज्ड एस्टिमेट इस वित्तीय साल में, साल जो 31 मार्च खत्म हो रहा है, उसमें आपका था 9,171 करोड़ जी, और बजट एस्टिमेट जो आने वाले वित्तीय साल का बजट में वो हो गया 2,257। और अगर आप पिछले 2 साल और पीछे जाएं तो करीब 37,000 करोड़ होता था। तो 37,000 करोड़ से उसको 2-3 साल में कम कर सिर्फ 2,000 करोड़ पर। ये ज़्यादा से ज़्यादा रसोई गैस का सिलेंडर और केरोसिन, उसमें डीजल की सब्सिडी होती थी, जिससे खेती में आपका ट्रैक्टर चलता है, आपका पंप चलता है, आपके ट्रक्स चलते हैं, और उससे पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से चलती है। वो सारी की सारी सब्सिडी आपने कम कर दी है। इसी तरह से और भी जितने भी आप देखिए, रोज़गार का समस्या है, रोज़गार एक बड़ा समस्या है, आपने NREGA का पैसा कम कर दिया। खेती एक बड़ा समस्या है, उसमें आपने एग्रीकल्चर का बजट कम कर दिया। आप जो भी इस तरह के मेजर सेक्टर्स हैं, मेजर एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ पर लोगों की आजीविका का जो लोगों की आजीविका से सीधा जुड़े हुए हैं, उन सब में जो है बजट का खर्चा कम हुआ है। अगर आप सोशल सेक्टर्स देखेंगे, शिक्षा में, एक मिनट के हम जाएंगे शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। मैं सुरजीत के पास आने के पहले आपसे एक सवाल ये मनरेगा का बात आपने किया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ये ग्रामीण इलाके लिए एम्प्लॉयमेंट गारंटी और की जो कार्यक्रम है, देखिए रिवाइज्ड एस्टिमेट में लगभग 90,000 करोड़, 89,400 करोड़, वो बजट एस्टिमेट में 60,000 कर दिया जी। बट सरकार का कहना है ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ज़रूरत पड़ेगा हम सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ले आएंगे और पैसे ज़्यादा मिल जाए। नहीं, पहली बात तो ऐसा असल में होता नहीं है। असल में जो होता है कि जब राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं होता है नरेगा का, तो वो काम नहीं करवाते हैं, तो वो काम लोगों को मिलता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि लोग एक्चुअली डिमांड करते जाते हैं, और उनको आप देखेंगे पुराने आंकड़े तो बहुत कम परिवार ऐसे होते हैं जिनको 100 दिन का काम मिलता है, बावजूद इसके कि बेरोज़गारी इतना बड़ा समस्या है। 100 दिन का काम बहुत कम परिवारों को मिलता है, और ये आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। और इसके साथ साथ जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर डिमांड के कारण आपको बढ़ाना पड़ रहा है, तो आप अगर पिछले 2-3 साल देखेंगे तो नरेगा एक ऐसा स्कीम था जिसमें कोविड के दौरान बहुत समस्या होने के कारण आपको पैसा ज़्यादा डालना पड़ा। और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जैसे फर्टिलाइज़र, अभी बहुत विश्व बाजार में फर्टिलाइज़र की कमी है, दाम बहुत बढ़े हैं, जिसके कारण से सरकार को फर्टिलाइज़र सब्सिडी बढ़ाना पड़ा, लेकिन इस बार फिर कम कर दिया। बिल्कुल जी, अनुदान कम हो गया। सब्सिडी में आपको आंकड़ा बता देता हूँ, 22% के आसपास कम हो गया। आपने कम कर दिया। आपका रिवाइज एस्टिमेट में है 2.25 लाख करोड़, वो गिर के 1.75 लाख करोड़। आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिन समस्याओं के कारण ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत थी, वो समस्याएं अभी जस की तस वैसी की वैसी हैं, पर आप उसको पैसा आप कम कर दे रहे हैं। Let me come to you, Professor Surajit Mazumdar. You know, let me highlight what the government says, and spokespersons of the government and supporters of the government are some positive features of this budget. And I'll come to healthcare and education a little later, but various loan guarantee schemes for माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो नौकरी आते हैं लोगों को, MSMEs, ये बढ़ा दिया सरकार ने। और साथ साथ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो अलग अलग जैसे सड़क बनाने के लिए खर्च होता है,
ये भी सरकार बोला कि 33%, 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया पहला बार. So on these positive features of the budget. Well, in the case of a budget, one is what is the actual reality of the budget and one is the way in which it is projected or sought to be projected. आप किसी भी एक विशेष क्षेत्र में खर्चे को अलग से नहीं देख सकते. पहली बात तो आपको देखना पड़ेगा कि पूरा जो खर्चा है उसमें क्या हो रहा है, और उसमें अगर हम देखें तो ये पिछले साल भी यही हुआ. 2022-23 का जो वर्ष अब समाप्त होगा मार्च में, और 2023-24 में भी अगर हम देखें तो अगर आप जो केंद्र सरकार का खर्चा है उसकी बढ़ोतरी में जो रफ्तार है वो जीडीपी में बढ़ोतरी के रफ्तार से नीचे है, और जो कीमतों में वृद्धि हो रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो हकीकत जो ये है कि सरकार अपनी खर्चे को कम करने की प्रक्रिया में को प्राथमिकता दे रही है. उसके तहत कुछ बोलने के लिए आप कहीं जब ये उद्देश्य हो जाता है तब ये है कि आप अगर एक जगह कहीं थोड़ा खर्चा बढ़ाते हैं तो कहीं और काटते हैं. जो काटते हैं वो आप बोलते नहीं हैं, और जो बढ़ाते हैं उसको आप सामने रख के पेश करते हैं. तो ऐसी ही है. अगर आप आंकड़ों को देखें तो कई क्षेत्रों में जैसा कहा कटौती भी तो हुई है जी, कटौती भी हुई है, और एक जगह आपको जब लगा कि आज ये बेहतर है पब्लिसिटी के लिए तो आपने वहाँ थोड़ा बढ़ा दिया. अगर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं जैसे NREGA हो या फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो, मजबूरी बन जाती है बढ़ने के लिए, जब उद्देश्य ये है कि खर्चा कम करना है, तो तब ये भी होता है कि जो आपने बजट में कहा खर्चा करेंगे उतना खर्चा आप हकीकत में नहीं करते. एक जगह कहीं बढ़ाना पड़ता है मजबूरी में, तो तब आप दूसरी जगह कटौती करते हैं. अच्छा. और अगर आप पिछले साल और इस साल का आंकड़ों देखेंगे तो आपको ये सारे चीजें मैं मिलेंगे. एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं अध्यापक चिरश्री दासगुप्ता जी के पास मैं जाऊँगा. ये जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको जो वित्तीय घाटा है, दे हैव बीन अलाउड अ फिस्कल डेफिसिट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GSDP कहते हैं हम लोग, 3.5%. बट दे ऑल्सो सेड इसमें 0.5% आर लिंक्ड और टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स. आप सब जानते हैं, जो एक समय हम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स कहते हैं, हम कहते हैं आजकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम, इनका आर्थिक स्थिति अत्यंत गंभीर है बहुत सारे कारण के लिए. तो ये उनको कुछ तो फ़ायदा मिलेगा कि आप ये जो डिस्कॉम्स जो है राज्य सरकार के, कुछ they'll get some relief because they are all running at huge losses, they are steeped in debt. But these are conditions that you have to do certain set of reforms which the central government decides in order to be able to do that borrowing. तो यानी कि राज्य सरकारों के अधिकारों पे हमला हो रहा है, और केवल इससे नहीं हो रहा है. अगर आप राज्य सरकारों को जो केंद्र सरकार से मदद मिलता है, आर्थिक मदद, उसका एक हिस्सा होता है कि राज्यों का एक हिस्सा केंद्रीय करों में, टैक्सेस में होता है. वो हिस्सा जो है आप लगातार कम करते आए हैं, और जो रिसोर्स ट्रांसफर्स होते हैं स्टेट्स को, उसमें भी कटौती करते आए. आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बात किया कि उसको इस बार बढ़ाने की बात की गई. पिछले वर्ष भी जो किया था, इस वर्ष भी वही स्थिति है कि आपने राज्यों को जब GST कॉम्पनसेशन सेस नहीं दिया, जब कोविड के दौरान आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो आपने एक इंतजाम किया कि केंद्र सरकार कर्जा लेकर राज्य सरकारों को GST कॉम्पनसेशन के बदले में लोन्स देंगे. उसको आपने पिछले वर्ष समाप्त कर दिया. उसके बदले में आपने कहा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए राज्यों को असिस्टेंस देंगे. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो आप असिस्टेंस दे रहे थे वो पिछला जो लोन दिया था उससे कम था. और इस बार भी जो एलोकेशन दिया गया है वो 2020-21 में भी जो लोन दिया गया था उससे कम है, लेकिन उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बढ़ा रहे हैं इस रूप में दिखाते हैं. और अगर हकीकत में कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें, केंद्र सरकार और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सार्वजनिक इन्वेस्टमेंट, पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो दोनों का मिला के जो होता है, उसको अगर आप देखें तो पिछले वर्ष में
पिछले वर्ष में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ है केंद्र सरकार के एंटरप्राइजेस और केंद्र सरकार के बजट के माध्यम से, वो उसका जीडीपी में हिस्सा कम हुआ है. All right. I'm going to come back to all three of you. There are several subjects I want to discuss with you, including the personal income tax reliefs that have been given to the middle classes. But let me first go to Professor Chirashree Dasgupta. Professor Chirashree Dasgupta, you've just heard what Dipa Sinha ji, Vikas Rawal ji and Surajit Mazumdar have said. Perhaps you'd like to add to what they've said so far, and then I can ask you one or two specific questions. Would you like to add to what they've said? Yes, I would just like to add three brief points. The first is that there is a lot of window dressing. Okay? If you read the economic survey and the budget figures together, then what you see is that this thing that you were asking, Surajit, about, like, you know, people have this sense that this is a populist budget, etc., is that whenever they, in most cases, what they're giving you are absolute numbers and not as proportions of GDP, even in the economic survey. Okay, so this thing that either your GDP figures are inflated or the actual, like, if your GDP figures are right, then despite the growth that you are claiming, the compression that you are actually bringing onto the economy through the budget is actually much higher when compared to what is, like, when you look at it from this perspective. The second thing that I want to add is that if you look at the overall gender budget, and I'm sorry, I'm going to talk like, you know, I did last year, exactly the same thing, because nothing has changed, right? So the gender budget, apart from the fact that it is a real compression in real terms, it's actually a decrease in real terms, the thing is that this 30% allocation, that any scheme that has 30% allocation to women is counted as part of the gender budget. Now, this is another big hoax that's running for years now, and it's surprising that there is not much talk about this, no discussion about this, that the government does not really produce figures telling us the actual number of beneficiaries in each scheme, whether it is actually 30% or not. Okay? All right. Okay. The third, just the third point. Please go on. Please go on. Which is that if you look at that claim that you told Deepa, which is that this is an inclusive budget, etc., and especially mentioning, well, the minorities were not mentioned, but everyone else was mentioned, the SCs, the religious minorities, except for the religious minorities, the other marginalized communities were mentioned. But what you can see is that the overall allocation to what we call the SC budget, the ST budget, and the gender budget, all of this has seen like extreme compression this year. मैं आपको रोक रहा हूँ. आप कह रहे हैं कि जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए जो बजट में सरकार ने पैसा दिया सचमुच नहीं बढ़ा मगर कम हो गया. मैं एक सवाल आपसे इस समय पूछना चाहता हूँ. ये सरकार तो निजीकरण में विश्वास करते हैं. दे आर फर्म बिलीवर्स इन द वर्च्यूज ऑफ प्राइवेटाइजेशन. तो इस बजट में हमारी जो पब्लिक सेक्टर है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, इसके लिए कुछ है? इज देयर एनीथिंग फॉर द पब्लिक सेक्टर? So I'll talk, that connects to that question you were asking, Surajit, about the infrastructure question. Now, if you look at it, first of all, once again, this is something I said last year also, which is that if you look at what is driving this, the National Infrastructure Plan and the National Monetization Pipeline, which is that you develop some infrastructure and then you monetize it and hand it over to private players on a lease. That's like the general layout behind. So one is that whatever increase is there, okay, which is at the cost of decreases elsewhere, is actually for eventual privatization of infrastructure.
Okay. But the second more important, equally important thing is that if you look at what the announcements had been, like not within the budget, but like generally what has been flagged for the last few months, etc., and especially to the run up to the budget, that this is once again a large scale infrastructure, okay, and what is called nodal infrastructure. Okay, and there is very little for arterial infrastructure. There is very little for rural infrastructure. And in fact, the cut in the overall that the Ministry of Rural Development has seen this year, which is a continuation from last year, essentially means that once again the infrastructure development, it's the focus of infrastructure development is for the privileged few at the cost of the larger sections of people, and especially poor people. Professor Dasgupta, I'm going to ask you to comment. I'm going to read out a few paragraphs from what Finance Minister Nirmala Sitharaman said. Like you also studied in the Jawaharlal Nehru University. I didn't. You didn't. You teach there. I beg your pardon. Okay, but let me just read out a few paragraphs. ये हमारे अमृत काल का पहला साल, 75th year of our independence. And what the finance minister is saying, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%, highest according to her among all major economies, despite the massive global slowdown due to COVID-19 and the war, and a war, that's the word she uses. And he said the Indian economy is on the right track. Despite challenges, we have a bright future. I suppose all finance ministers have to exude optimism, as she does. But she says, we've sort of holding our heads high, and the elders who had fought for our independence are, we are sort of they must be very proud about ours. Specifically, he's saying all citizens are having a better quality of life of dignity. The per capita income has more than doubled. I suppose the annual per capita income to 1.97 lakh rupees. And in these 9 years, the Indian economy has increased in size from being the 10th largest to the 5th largest. And so this is, I'm just reading out some excerpts from the finance minister's statement. Yes, please. Your comments. Okay, so first of all, I mean, a budget which talks about the world economy, a budget speech which talks about the world economy and tries to place India within that, but does not mention at all that there has been a crisis of unemployment and inflation that has been sort of at the center of the social crisis, the economic crisis, that the brunt of the economic crisis that the majority of people in India are facing. Actually, as you said, that she's exuding optimism, but the question is optimism for whom? And I will just connect this to what she announced in terms, two announcements. One is that she talked about this large amount of allocation for SHGs, women's self-help groups, which will be organized into large collective enterprises, which she called collectives/enterprises, right? I mean, that also is telling, isn't it? Like collectives are equal to enterprises. Now, what is that? Like that is basically for private financial players to put in more and more money there. And you know the story of microfinance, high interest, etc. What has happened to women SHG groups as a result of that? So on one hand, it is like using these SHG groups to enhance the penetration of the financial sector into the rural areas. And the second, on the other hand, what has been announced and which has not been talked about is the relaxation of compliance requirements. And I just have the numbers. Just give me a second. I'll just take it out. Basically, this ease of doing business as part of the ease, and 39,000 compliances reduced, 3,400 legal provisions decriminalized. Okay, so you can see the
optimism is for the corporate sector, the private capital, for private big capital. So legal compliances, statutory compliances all reduced, and infrastructure being diverted, more infrastructure being funds being diverted more and more to promote privatization of infrastructure. And on the other hand, what you see is a move to even privatize, like increase the penetration of finance capital into rural areas using women SHGs. Okay. And so it's very clear that the agenda and optimism is for finance capital. Right. I'm going to get back to you, Professor Chirashree. There are 2 or 3 issues that I'd like to discuss. One is this whole issue of subsidy. We've touched on it, but I'd like you to elaborate on it. Let me start with you, Dipa Sinha ji. If you look at, the biggest expenditure in the budget is usually on interest payments, and this time too, it's on interest payments. But after interest payments, कि जो व्याज दर के बाद सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार का खर्च होता है ये अनुदान या सब्सिडीज़, और ये सब्सिडीज़ में 3 मोटे हैं: खाद्यान्न, फूड, खाद, फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम पदार्थ. And we see, if you club all these 3, the budget estimate was 3.74 lakh crore for 2023 and 2024. Now when you compare that to the revised estimate, it's a fall of 28%. It's a very, very sharp fall. And if you just look at food subsidies alone, the fall is, around 30%, a little more than 30%. In fact, the revised estimate talks about 2.87 lakh crores, and the budget estimates brings it down to below 2 lakh crores to 1.97 crores. So actually, are our subsidies for the poor going up or not? Not at all. So that's how this whole budget balancing is happening, right? Like Surajit was also talking about it. If they are discussing this increase in capital expenditure and at the same time saying that there's fiscal consolidation also happening, kahin to cut raha hai, and it's very clear kahan pe cut raha hai. This is one example that you've given: food subsidy, fertilizer, petrol. We know who this helps. It helps the poorer people. Food subsidy we've already talked about. 10 किलो जिसको मिल रहा था 5 किलो मिल रहा है, लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रहा है, वेतन तो घट गया है. Rural wages have stagnated, even declining in the last few months. So this is where it has been cut. There are other areas also where its spending has been cut. If you look at health, again in real terms, if you look at education in real terms, you look at, Chirashree talked about the gender budget, you look at the allocations to Women and Child Development Ministry, you look at the allocation to school midday meals. Even the बिल्कुल जी, PM पोषण का जो मैं आंकड़ा आपको दे देता हूँ, the midday meal scheme, the revised estimate was 12,800 crore, and the budget estimate is 11,600 crore. So it's down. Absolutely. So all the kind of welfare architecture that we have, which could help people at this time when employment is not being created, when wages are stagnant, all that has been undermined in this budget, where the allocations have been reduced, and therefore I also don't understand why it is being called a populist budget. एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल उठा रहा हूँ, और बहुत लोग कहते हैं ये बहुत साल के बाद, कुछ सालों के बाद, इस बार जो मंत्रालय है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, दोनों का बजट आउटले बढ़ गया. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड. तो बढ़ गया में हमें ये भी देखना पड़ेगा कितना बढ़ गया. GDP भी बढ़ गया, दाम भी बढ़ गए. If we adjust to these two, has it increased? It has not increased. And I think we have to look at it vis-a-vis a proportion of the GDP and vis-a-vis in terms of real terms. Secondly, we also have to look at it in terms of हमने खुद अपने आप के लिए जो गोल सेट किया है, जो पहले के सरकारें ने भी किया, इस सरकार ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी, हेल्थ पॉलिसी भी जो आया था 2017 में, there is a goal to spend 6% on education, 2.5% to 3% on health. We are nowhere close to that. Okay. So, Vikas Rawal ji, the government always takes these nominal figures because it helps them. Per capita income has doubled in 9 years, or more than doubled. As Professor Jean Reyes has pointed out, if you take these as a proportion of GDP, or if you look at it as a proportion of total expenditure,
जितने सारे समाज कल्याण के लिए कार्यक्रम है, सोशल सिक्योरिटीज़ के, बच्चों के लिए जो पोषण के लिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन, मैटरनल स्कीम्स, इन ऑल ऑफ देम यू सी आइदर अ स्टैग्नेशन और अ डिक्लाइन। तो इस विषय के लिए दीपा जी ने अभी अभी जो कहा, इस विषय के ऊपर आप और कुछ जोड़ एक दीजिए। मैं ये बात आपको जोड़ना चाहूँगा कि ये जो जैसे फूड सब्सिडीज़ की हम बात कर रहे थे, उसमें जो कमी है उसके दो भाग हैं। एक तो ये कि सरकार जो पहले 10 किलो अनाज दे रही थी उसको कम करके अब 5 किलो कर दिया गया है, एक तो उसके कारण से कमी है। दूसरा, इसके पीछे ये अजम्पशन है कि विश्व बाज़ार में खाद्यान्न के दाम ऊंचे रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे और सरकार को अनाज खरीदना नहीं पड़ेगा और प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए सरकार को खर्चा उसमें बचा लेंगे। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जब खाद्यान्न का दाम ज़्यादा है, वो दाम ज़्यादा होने का कारण ये है कि खेती में खर्चा भी ज़्यादा है और उसका जो किसान को पैसा ज़्यादा मिल रहा है, वो लागत में उससे ज़्यादा किसान को नुकसान हो रहा है। तो अगर आप खाद्य में सब्सिडी कम करते हैं तो आपको एग्रीकल्चरल सब्सिडी को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगर वहाँ पर नुकसान हो रहा है तो यहाँ पर आप उसको कॉम्पनसेट करें। पर आपने दोनों को कम किया है। आपने मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो 1 साल से ज़्यादा जो पंजाब के किसान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान का जो आंदोलन चला, ये जो कानून लागू किया, इसका असर कुछ नहीं हम देख रहे हैं बजट के ऊपर कि हमारे देश का जो कृषक है, जो किसान है, इन लोग के लिए बजट में और कुछ स्कीम्स के बारे में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पीएम किसान जब स्कीम चालू की गई थी तो ये कहा गया था कि 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये साल का दिया जाएगा। अभी जितना आप एलोकेशन कर रहे हैं उससे 12 करोड़ को 6,000 रुपये आप दे ही नहीं सकते, उतना पैसा ही नहीं है। और इतने साल गुजर चुके हैं, वो 6,000 ही है, उसमें कोई इन्फ्लेशन का आपने अकाउंटिंग नहीं किया है। मगर सरकार कह रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, जी, आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जी, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन क्रॉप, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड। जी। तो आप ये कह रहे हैं, हाँ, आप ये कह रहे हैं कि हम फसल का उचित दाम नहीं देंगे, हम आपको खाद उचित दाम पर नहीं मुहैया कराएंगे, पर हम एक डेटाबेस बनाएंगे, हम आपके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफॉर्मेशन सेंटर बनाएंगे। आप बोल रहे एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट विल बी इंक्रीज टू 20 लाख करोड़ विद फोकस ऑन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ये मत्स्य संपद योजना टारगेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़। पर उसमें तो कोई बजट एलोकेशन नहीं करने की जरूरत है, वो तो उसका तो बजट से कोई लेना देना ही नहीं है। आप कहाँ पैसा डाल रहे हैं? Surajit, I want to ask you about a point that you alluded to, but I'd like you to elaborate. ये जो मुद्रास्फीति की बात हम कर रहे हैं, इस विषय के ऊपर वित्त मंत्री कुछ कहा नहीं खास, मगर there are certain implicit assumptions that have been made in the budget about inflation, about GDP growth, किस रफ्तार से हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति बढ़ेंगे। जैसे एक सवाल बार बार हम उठा रहे हैं कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम, अगर 140 करोड़ हमारे देश की आबादी है, हमारे GDP उसमें if we divide it per head, it comes to 1 lakh plus 1,97,000. What was the figure? I'm just remembering it. What Mrs. Sita Raman pointed out, that yes, almost 2 lakhs, 1,97,000. What sense do you make of these figures? Because these are nominal figures. Yes. No, the first point to recognize is that we are in a phase where in the last few years there has been a significant increases in prices. So the rate at which inflation rate or the rate at which prices have been increasing has gone up tremendously in the last few years. And persistently high. Persistently high. At a time when actual production or output has either collapsed or been constrained. If you look at the real per capita income as per the CSO's estimates for 2022-23, the first advance estimates, that is only 2.5%, less than 2.5% above the level in 2019-20, after 3 years have passed. This is what they call recovery is complete. In this same period, prices have gone up tremendously. So naturally, despite the fact that in real terms production has not increased that much, the
nominal GDP has gone up. And instead of doing anything to address that problem, the worst combination you can have, where production is depressed and prices are rising, where you can't even justify the inflation in terms of the fact that it's at least generating growth and employment. The worst combination that you have, instead of doing anything to address that, you basically take advantage of the fact that there's inflation. And you to beef up talk your about numbers. various things that have grown, including GST revenues. No, 1 minute. I got you. So you will say tax revenues have gone up. Look, GST revenues have gone up. These revenues have gone up. Substantial part of that is on account of inflation. You will say, I've increased expenditure or allocation on something by so much, which is also because of inflation. No, on this point, what are the implicit assumptions made in the budget when you look at the fiscal deficit and you look at the GDP growth numbers? What are the implicit assumptions that have been made about GDP growth close to 7%, 6.9%, and inflation? If you look at the 2022-23 financial year, as per the estimates which have formed the basis for the thing, for what is the fiscal deficit as a percentage of GDP, there is a 15.4% increase in nominal GDP, of which 8.4% is inflation. 8.4%. This is more than twice what RBI says is a reasonable rate of inflation. So this is 8.4%. Tolerable rate of inflation. And compared to that 15.4% inflation, in 15.4% increase in nominal GDP, their expenditure increase was only about 10% compared to the previous year. आपका कहना है कि सरकार कह रहा है कि आने वाले वित्तीय साल में भी मुद्रास्फीति का जो स्तर है, for the coming year, they have assumed a nominal increase in GDP of 10.5%. If you take the economic survey's projection of 6.5% as the real GDP growth, if assuming that is correct, it would mean that the government is assuming that in the next year, the inflation rate will be 4%, come down from 8.4% in this financial year to 4% in the next financial year. What is the basis for that assumption has not been spelled out. Okay. What has been the basis for that assumption? And the only thing they have done which can actually result in a lowering of the inflation rate is to hit at the incomes and buying power of the large majority. That if they cannot buy in the market, prices may come down because of that reason. That will be the only measure that they have taken. I'm going to come to you in a very short while, but let me once again return to Professor Chirashree Dasgupta. You know, the government says it's doing a lot for healthcare, education, but as we've already discussed, these numbers, when you look at these numbers as a proportion of GDP or as a proportion of total expenditure, they're far from impressive. Nevertheless, the government has announced a host of schemes on health, education, skilling, on nursing colleges, 157 new nursing colleges, sickle cell anemia elimination mission, more on medical research, more on pharmaceuticals, innovation in pharmaceutical, multidisciplinary courses for medical devices, teachers training programs, National Digital Library for children and adolescents. I could go on and on. But this is essentially the government is saying, look, we are doing a lot for education. What is your view? Okay, the point is that a lot of announcements have been made, but if you look at the actual budget and for the allocations for each of these, there is hardly any allocation for any of the things that have been announced. And the only thing that seems to have seen an increase in allocation is the Ayushman Bharat scheme, which anyway is like mostly, once again, a mode of privatization. So in that sense, there is a big gap between, they're not walking the talk, let us say. 1 minute, I'm interrupting you. Yeah. On the Pradhan Mantri Awas Yojana, it's been outlay has been enhanced by 66% to over 79,000 crores. Yeah. So, like, first of all, we have to look at the utilization for the last few years and the actual, as I had said earlier when I talked about the gender budget, that they never come out with very
sort of transparently on the number of beneficiaries, the number of houses that have been actually completed and handed over. And then there, of course, there is a whole chain of the way this is utilized, which comes from ground reports, some research that even I have done, which shows that actually what is the allocation and what actually reaches the Awas Yojana, people who are entitled to Awas Yojana, is often, there is a huge gap between what is announced and what is actually reaches the people. But the point is that we haven't seen in the last few years, unlike before, a clear, transparent releasing of data about how much has been utilized, the utilizations, and also what is it that, like, the number of people who have actually got houses. And unless that comes, one cannot simply look at an allocation and say that this is huge. And moreover, that is coming at the cost of, so you are sort of saying Awas Yojana, but you are cutting the SC/ST budget. You are cutting Manrega. So you'll give houses, but you'll not give them employment. Okay? You are saying the MSME sector will create take care of employment, and you have done nothing for the MSME sector in this budget. Okay. I want to move to a different topic, and I'm going to start with you, and I'm then going to move to the other guests who are with me here in the studio of NewsClick. और मेरा सवाल है कि इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी उनका बजट पेश किया, बजट का भाषण उन्होंने दिया, ताली आया बहुत बार. सबसे ज्यादा मिला ताली कब? जब वो व्यक्तिगत आयकर के ऊपर नया जो कार्यक्रम किया, द न्यू अनाउंसमेंट्स ऑन पर्सनल इनकम टैक्स. और आपको याद आएगा कि 5 साल पहले भी, 2019 का लोकसभा चुनाव को पहले भी, there were changes, there were modifications made in the personal income tax regime. And I want you to talk a little bit about this. And it seems to be very popular among the middle class, because they're saying those with income up to 5 lakh do not pay any income tax under both the old scheme, that is the 2020 scheme, and the new scheme. Now what he's done, in a sense, the government is nudging people to move to the new tax regime, and the limit has gone up to from 5 lakh annual income, taxable income, to 7 lakh, and they don't have to pay any tax. And that, if you do absolutely nothing, no other tax saving scheme, you still get a minimum of 10,000 rupees. You can actually get much more. The second proposal is the way the tax slabs have been worked out. Again, there used to be 6 slabs, and now it's 5 slabs. So up to 3 lakh, 0 tax. 3 to 6 lakh, 5%, 6 to 9 lakh, 10%, 9 to 12 lakh, 15%, 12 to 15 lakh, 20%, and above 15 lakh, 30%. Once again, major reliefs. Those with an annual income of 9 lakh rupees will be required to now pay 25% less, from 60,000, instead of 60,000, 45,000. The higher income group, those with an income, taxable income of over 15 lakh rupees, now they'll pay only less than 20%. The reduction has come, but this just 10% of her or his income. From now, earlier liability was 1.87 lakh, 1.87500 lakh. It is now down to 1.5 lakhs. So we know that the middle class, the salaried middle class, they are influential. ये जो मध्य वर्ग के जो लोग हैं, तुम लोग बहुत चिल्लाचिल्ली करते हैं, तो मगर इस बार सीतारामन जी इन सबको खुशी किया. बहुत इन लोग इस बार चिल्लाचिल्ली तो नहीं कर रहे हैं, but they seem to be quite happy. इसके बारे में थोड़ा बहुत आप कुछ कीजिए. कहिए. So I just want to say 2 things. The first is that this is a move which has been there, and it's been slowly rolled out to move people from the old tax regime to this new tax regime, in which they will do away with all exemptions. Okay? And if you look at different slabs, like if you only look at people within a certain slab, it doesn't become clear. It has to be a comprehensive exercise, and once you do that, and I've been looking at some of
earlier, before I joined here, some of the tax experts are saying that there will be a loss about of 36,000 crores is what they're estimating. Actually, that's right. 37,000 crore. Yeah. The total revenue loss will be direct taxes about 37,000 yeah. crore, of which I suppose the bulk will be of this personal income tax Yeah. reliefs. So, like, the point is that this is a longer strategy. I'm not very convinced that there will be a huge gain by moving to the new income slabs for the people on the lower rung of income tax payers because of the doing away of exemptions. So actually, in effect, it is kind of a carrot to move people to the new tax regime and increase the effective taxation rates for people who are in the hierarchy of income taxpayers right at the bottom. Okay, and the other is that and to do that, okay, they are willing, maybe in the short term. I'm not convinced about that figure of 37,000. I need more time to go into the, but like, even if that happens, that is the way that will be once again sort of compensated for is by more compression in expenditure in social and economic sectors which directly matter for the working classes. So it is the middle class benefiting at the cost of the working class, and that is actually the real playoff in this budget. All right, I'm going to come to you, Professor Chirashree, for your final comments. I'm going to ask Professor Surajit Mazumdar, for your remarks on this. I mean, the argument is that if you give the middle classes benefits, then they spend more. And that's good for the economy. Demand picks up. And इसके बारे में आप कुछ कहिए कि हमारे देश के जो मध्य वर्ग के लोग हैं, इस बार तो खुशी है. शेयर बाजार का भी जो जितने संवेदिक सूचकांक है वो थोड़ा बहुत इधर गया, ऊपर गया, उथल चढ़ा हुआ, मगर ऊपर गिरा. Except for the stocks of one particular corporate group, everything was in the positive territory. Yes. तो जिसका 2 साल पहले 5 लाख आया था, इनकम था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइसेस, अगर डीए मिलता तो वो ऑलरेडी 6 लाख के करीब पहुंच गया होता. तो इनफैक्ट 5 लाख से 7 लाख उस लिमिट को रेज करने का भी क्वांटम ऑफ बेनिफिट जो है उस सेगमेंट में बहुत अधिक नहीं है. और उस सेगमेंट में लोगों की आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है ये कहना मुश्किल है. लेकिन जो इनकम टैक्स तो सिर्फ 5 लाख और 7 लाख आय कमाने वाले भी नहीं देते, और ना ही ये है कि जिनको इनकम टैक्स देने की जिम्मेदारी जिन पे है उनकी अधिकतम आय 15 लाख है. 15 लाख से कहीं ज़्यादा कमाने वाले भी लोग हैं. हम इतना आयकर नहीं देते हैं जी, छुपा के रखते हैं. हम इतना जानते हैं कि उस स्तर की आय जिनकी है वो 2019-20 के मुकाबले में, कोविड के पहले के मुकाबले में उसमें बढ़ोतरी हुई है. अगर उसमें बढ़ोतरी हुई है तो आपने किस आधार पर उस सेगमेंट को टैक्स का कंसेशन दिया है? अच्छा, कि जो अधिकतम टैक्स रेट है उसको 42.7 से 39% पर उतारा है, और आप कह रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और चीज़ों पर खर्च करने के लिए. आपने साथ में ये भी नहीं किया कि जो एक टैक्स आपने कोविड के दौरान लगाया था जिसका असर सबके ऊपर पड़ता है, जो तेल के टैक्सेस हैं, पेट्रोलियम सेस, उसमें जो भी थोड़ी बहुत कमी बीच में की थी, लेकिन उसको अभी तक वापस नहीं किया. तो आपने अगर मिडिल क्लास को या उच्च स्तरीय को टैक्स का रिलीफ देना था तो बाकी लोगों को क्यों नहीं टैक्स का रिलीफ दिया गया? और दूसरी बात ये कि जहाँ तक अर्थव्यवस्था की स्थिति है, ये तो साफ है कि अर्थव्यवस्था में मांग नहीं है. चलिए, ठीक है. तो और ये जो टैक्स कंसेशन है जो एक छोटे से सेक्शन को मिलेगा, इससे you're saying it will not spur demand and lead to higher purchasing power and higher demand for articles of mass consumption. In fact, if you don't do spending, अच्छा जी, then you do not create the possibility of that kind of a multiplier process. प्रोफेसर विकास रावल जी, ये देखिए महंगाई की बात हो रही है. अगर
खाद्यान्न का महंगाई बढ़ जाता है, तो इसमें हमारे देश में वैसे भी समावेशी तो भूल ही जाइए। जो अमीर लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनके बीच जो दुराई है, जो अर्थव्यवस्था में जो एक असंतुलन हम देख रहे हैं, that has gone up. The inequalities of income and wealth seem to have gone up. तो ये सिर्फ लोग लुभावन करने के लिए ही दिखा रहे हैं, ये सरकार जो कह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ इसके पहले जवाब देने के पहले एक चीज़ और जो आपने चिरश्री दासगुप्ता से पूछ रहे थे उसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो आवास योजनाएं हैं, इनमें जो बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में एक चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत मूल परिवर्तन आवास योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में हुआ है। वो यह है कि मुख्य स्तर पर आवास योजनाओं में अब सरकार घर बना करके नहीं देती है, प्राइवेट बिल्डर्स घर बनाते हैं और ये उनको सब्सिडाइज करता है। तो ये जो आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि इसमें से कितना जो है प्राइवेट बिल्डर्स की जेबें गर्म करने में जा रहा है और कितना लोगों के पास जा रहा है, ये सवाल उठाने की ज़रूरत है। जहाँ पर असमानता का सवाल है, वो इसमें कोई शक नहीं है, ये दुनिया भर के रिसर्च इस पर हुई है कि भारत में असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ी है और विश्व में सबसे ज़्यादा असमान देशों में आज भारत की गिनती आती है। और जिस तरह का बजट प्रेजेंट किया गया है उसमें ये साफ है कि जो गरीब लोग हैं, जो मज़दूर वर्ग है, जो किसान हैं, उनके ऊपर जो है अभी भार बढ़ा है, उनके लिए जो खर्चा होता था उसमें कमी आई है और जो संपन्न वर्ग है उसको जो है कंसेशन दिए गए हैं। ये आपको बजट में साफ देखने को दीपा जी, हमारे देश का जो स्वास्थ्य सेवा के ऊपर जो सरकार खर्च कर रहे हैं, सरकार कह रहे हैं कि पूरा विश्व में सब लोग हमें तारीफ़ करें, जिस तरह हम ये कोविड काल में, जो कोरोना काल में महामारी के समय हमने सरकार जिस तरह से इनका नियंत्रण किया है, नी सेज द वर्ल्ड इज़ प्रेजिंग इंडिया फॉर इट्स मैनेजमेंट ऑफ कोविड। तो इसका कोई असर हम देख रहे हैं? भारत सरकार किस तरह से स्वास्थ्य सेवा के ऊपर खर्च कर रहे हैं? एक तो आई डोंट नो कौन सा वर्ल्ड है जो प्रेस कर रहा है, क्योंकि एक्सेस मोर्टेलिटी की जो फिगर्स आ रही है दुनिया भर से, उसमें तो लग रहा है कि कोविड मैनेजमेंट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड इन आवर कंट्री। बट लुकिंग एट दी एक्सपेंडिचर अगेन, आई वांट टू आल्सो पॉइंट आउट जो जिस तरह की चीज़ें हम बोलते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया है कि अभी हम लोग 2.2% GDP हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं। बट इफ़ यू लुक एट इट, उसमें पिछले 2 साल से वाटर एंड सैनिटेशन को जोड़ दिया गया है हेल्थ में, because of which it looks like we are spending more, but it is mainly this Jal Jeevan mission which has been added on, which is about कि हर घर में नल का पानी, उसको अब हेल्थ में आप दिखा रहे हैं, तो लग रहा है कि हेल्थ का स्पेंडिंग बढ़ गया है। लेकिन आप हेल्थ डिपार्टमेंट का, मगर आप ये नहीं कहेंगे अगर लोगों को साफ पानी नहीं मिलेगा तो बीमारी नहीं मिलेगा? ज़रूर साफ पानी मिलना बहुत ज़रूरी है, बट यू आर एक्चुअली मिसलीडिंग पीपल ना, तो वो अलग लाइन में आएगा। आप उसको दिखा के बोल नहीं सकते हैं कि हम हेल्थ पे जितना खर्च करना चाहिए उतना कर रहे हैं। आप वो भी कीजिए, हेल्थ भी कीजिए, क्योंकि हेल्थ में काफ़ी ज़रूरत अभी भी है। ओके, I want to ask you a last question and please give your closing remarks as well on this. देखिए, हमारी सरकार तो नामकरण करने में बहुत सफल हुई है। मुगल गार्डन का नाम बदल गया। हम 2-3 नया नाम इस बार सुना है बजट का भाषण में। PM प्रणाम, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। PM विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान। मिष्टी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। और सबसे लोग आश्चर्य हो गए कि ये जो मोटा अनाज की बात हो रहा है ना, मिलेट्स, हमारे निर्मला सीतारामन जी एक नया नाम दे दिया, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब श्री अन्ना। तो इज इट दिस ऑल जस्ट कॉस्मेटिक चेंजेस और डू यू थिंक इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ द गवर्नमेंट? See, I think to have an impact on popularity of the government, there has to be something on the ground, and I don't understand how only नामकरण से वो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये श्री अन्ना का कहीं बजट में तो बजट लाइन नहीं दिखा मुझे। श्री अन्ना, आई चेक्ड बोथ द फूड एंड द एग्रीकल्चर बजट्स।
how will they propagate millets without spending on it, without giving farmers some incentive? India is the biggest producer of millets. India is the second largest exporter. But India is a big country. We can be biggest in many things, but you have population, to look at per we are the capita highest things. in the population also. Exactly, which is why we are the biggest in many things, even if we are not good enough. But just going by past experience also of Namkarans, midday meal has become PM Poshan, budget has reduced. ICDS has become Saksham Anganwadi, budget has reduced. Maternity entitlements has become part of something called Samarthya, budgets have come down. So what the Namkarans are doing is making it difficult to compare in the budgets ki kya ho raha hai. And when you dig deeper, you find that the budgets have reduced and the coverage has also reduced. जितने लोगों को मैटरनिटी एंटाइटलमेंट मिलता था उस कम मिल रहा है अब. जितने बच्चों को हम मध्याह्न भोजन खिलाते थे उससे अब हम कम खिला रहे हैं. So on the ground, it is a complete reversal. On paper, we have new names. Okay, thank you so much, Professor Dipa Sinha, for giving us your views. I'm going to ask Professor Chirashree Dasgupta to summarize her thoughts and her closing remarks on how she evaluates the last full-fledged budget presented on the 1st of February by Finance Minister Nirmala Sitharaman. And this is the last full-fledged budget before the next general elections, which are scheduled for 2024. And yes, there will be another vote on account, but this is the last, what they say, full-fledged budget. Would you kindly summarize your views? Okay, so if you look at what's been happening through the last decade, is that India's growth story has essentially been a story of like the creation of value through wage depression, okay, and the sort of the wage surplus ratio has been very adverse in terms of what is going to the working people, to the point where the last year's and the last available data from the annual survey of industry shows that in the organized industrial sector, just 23 paisa goes to workers for every 10 rupees of value that is created in the formal industrial sector. Okay, so that kind of gives an idea about where we have reached in terms of this, since it's a pre-election budget in most of the last decade, in terms of a growth process that is singularly based on wage depression. And this is carried out through the intensification of unpaid work, through throwing more and more people out of the labor force, and particularly women's labor, and also the Dalits, Adivasis, and increasingly the mobilization against Muslims, which has also led to creation of more and more precarity in terms of life and livelihood, which all goes to contribute to this wage depression. Now, so this budget is actually a continuity in terms of just carrying on that regime of accumulation, where there will be more and more wage depression, given the cuts in expenditure and given the transfers, the implicit economic transfer, which is being done from the poor to the rich, both in terms of labor, but also in terms of like taking away from the poor what were their entitlements and giving it to the corporates through what I have already talked about, the various means through it. In that sense, it is exactly what this government has been doing all so far, which is it is a pro-big corporate. It is an agent of big corporate finance, big capital, and this budget is just like the icing on the cake. Okay? This last full budget is an icing on the cake to really sort of gift it to the people who pay for their electoral bonds. All right, thank you so much, Professor Chirashree Dasgupta, for being with us and giving us your views. विकास जी, उन्होंने गिफ्ट का एक बात किया. मोदी जी का एक अहमदाबाद में एक बड़ा कार्यक्रम है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर. गिफ्ट यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी. हर बजट में हम देख रहे हैं कुछ ना कुछ मिल रहा है, कुछ छूट मिल रहा है, क्या नया कार्यक्रम दे रहे हैं. तो यही
गुजरात मॉडल का एक प्रतीक हम देख रहे हैं? मेरी समझ में इस बजट के दो मुझे समस्याएं दिखती हैं। एक तो ये कि जैसा कि हमने इकोनॉमिक सर्वे जो कल आया उसमें देखा और आज के बजट के भाषण में भी देखा कि ये सरकार जो है इस डिनायल में है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो अभी भी बहुत गहरी समस्याओं से जूझ रही है और इसलिए ये जो बजट है वो उस दिशा में बिल्कुल नहीं जाता है। इट मेक्स नो अटेम्प्ट टू एड्रेस, टू पुट मनी in ways that would somehow help bring the economy out of that crisis. It is in fact putting the money in ways that would actually deepen the crisis. The second thing is that it does nothing to provide relief to the large mass of people. So every people cope with the economic crisis are areas where the money has been reduced. प्रोफेसर साहब, विकास रावल जी, आप कह रहे हैं कि हाँ हमारे देश में जो ये बजट या ये सरकार का जो आर्थिक नीति वो समावेशी नहीं है, हमारे देश का जो असमानता है वो बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये ठीक लोगों को लुभावन करने के लिए बजट पेश कर रहे हैं, मगर सरकार का लोकप्रियता में कोई फ़र्क मिल रहा है? या क्योंकि हमने लगभग एक साल अभी तक नहीं हुआ, 2021 में जो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव हुआ, हम देखा कि हाँ ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत वो कम हो गया, मगर वापस आ गया भारतीय जनता पार्टी का सरकार। और बहुत सारे लोग मोदी जी को भगवान समझते हैं, भगवान का अवतार। शायद उसके पीछे यही अवधारणा है कि लोगों की जो भी आर्थिक स्थिति हो, हम जो भी करते जाएं अर्थव्यवस्था के साथ, हमारे पास दूसरे तरीके हैं जिनसे हम इलेक्शन जीत सकते हैं, और आप उस अवधारणा के साथ आप अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं। तो सुरजीत, वुड यू लाइक टू ऐड ऑन व्हाट आर ये जो दूसरा तरीका क्या है, और आप इनका ये भारत सरकार का जो अर्थ नीति हम देख रहे हैं, what is it that apparently has not made this government unpopular despite the rise in economic inequality, despite inflation, despite unemployment being at a 45-year-old high according to the government's own data? How would you sort of explain the political economy of this country in the budget? Why should I ask the question only assuming that the causality has to run in one direction? मैं ये कहूँगा कि ये सरकार की एबिलिटी टू विन इलेक्शंस, जैसे भी वो जीते, जितने दिन वो सफल होते रहे उस प्रक्रिया में, ये जो संकट की आप बात कर रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि क्योंकि जब तक इनको ये विश्वास है कि हम इलेक्शन जीतते रहेंगे, कुछ भी कर लें अर्थव्यवस्था में, लोगों का हालत जो भी कर ले, उनको किसी और मुद्दे पर लामबंद करके हम चुनाव जीत सकते हैं, इन बुनियादी मुद्दों पर वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हालत ये है कि जो प्रोसेस रहा है अभी तक वो है कि काम कम लो लोगों को, ताकि कमाई भी काम से कम हो। अब इस स्थिति पर पहुंच गया है कि काम को भी ख़त्म करो, कमाई को भी ख़त्म करो, और उस आधार पर ऊपर वालों को, बड़े कॉरपोरेट्स को और फलने फूलने दो। ये हालत हो गई है क्योंकि वी आर इन द मिडस्ट ऑफ अ वेरी डीप क्राइसिस, a crisis that existed before COVID, aggravated by COVID, in a world situation where the world economy is facing a grim situation. Even in that midst, your policy is of giving tax concessions to the rich and cutting expenditure. The policy that you have followed through all these, through a long period of time, what is the crisis was of itself a product of this reality, and you are only doing what is required to make that crisis worse. Thank you very much, Professor Surajit Mazumdar, for coming to the studio of NewsClick. And time alone will tell whether or not the government's economic policies will have an impact on the government's popularity, or the ruling Bharatiya Janata Party's popularity. और समय बताएंगे, अभी भी एक साल से ज़्यादा समय है लोकसभा चुनाव के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर विकास रावल जी, धन्यवाद, आपने न्यूज़ क्लिक का स्टूडियो में आए हैं। दीपा सिन्हा जी, थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर चिरश्री दासगुप्ता, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। तो हमारे जो मेहमान आए हैं न्यूज़ क्लिक का स्टूडियो में, साफ साफ आपको बताया, दिखाने के लिए सरकार बहुत कुछ कह रहे हैं, मगर जो वास्तव है, जो असलियत है, वो और कुछ है। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। वी गिव यू व्यूज़ इन वेज अदर चैनल्स डोंट, सो डू
keep watching NewsClick. Dhanyavad, Shubh Ratri. Thank you very much for being with us.